Wherever if you wanna go, I'm down. Hello and welcome to Credence Digital Learning. Today we are going to take a poetry of our Flamingo textbook that is titled as A Thing of Beauty. Let's start with the introduction. A Thing of Beauty is written by John Keats, who is a British romantic poet. A Thing of Beauty has been taken from Endymion, poetic romances. What is this Endymion? Endymion is based on a Greek myth, wherein a shepherd named Endymion fell in love with Moon Goddess. And that is the introduction of the poetry, A Thing of Beauty. Moving on to the justification of title and the theme, as the title suitably suggests, A Thing of Beauty is a joy forever. What does this mean? See, the nature is ultimate source of pleasure. Whenever we feel annoyed, whenever we feel dull after the monotonous life, what do? We go for vacations. जब भी गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम लोग वेकेशंस में जाते हैं. वेकेशंस के लिए यूजुअली हम वो जगह सिलेक्ट करते हैं जो कि रस्टिक होती है या जो अर्बन लाइफ से दूर होती है. We usually go to beaches, we go to hill stations, we go to the river side. Why? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि जो प्रकृति है वो हमें प्लेजर देती है. It relieves our stress, it relieves our anxiety. And that is what the poem deals with. That thing of beauty, whatever is beautiful. Now, is there a definition of beauty or beautiful? No. You might have heard that beauty lies in the eyes of beholder. Beauty देखने वाले की नजरिए में और आंखों में होती है. So whatever things are beautiful gives us everlasting joy. ऐसी खुशी जो कभी भी खत्म नहीं होती. It gives us cushion to bear the stressful moments of life. ज्यादा कंफ्यूज मत होइए. थीम को मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे. जैसे ही हम पोइट्री में डेल्व डीप करेंगे, यू विल गेट टू नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी लाइन. So let's start with a line-by-line explanation. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. क्या मतलब है इसका? जो भी चीज सुंदर है वो हमें एक ऐसा सुकून देती है, ऐसी खुशी देती है जो निरंतर चलती रहती है और उसका सौंदर्य बढ़ता जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता. But will keep a bower quiet for us. Now what is a bower? A bower is a shady place. जब भी हम धूप में चलते चलते थक जाते हैं तो हमें पेड़ की छाया की जरूरत होती है. और वो पेड़ की छाया क्या है? That is also a thing of beauty. जैसा कि मैंने कहा, everything that gives us pleasure, everything that relieves our anxiety is beauty. And a sleep full of sweet dreams. ऐसी नींद जिसमें हम सुंदर सपने देखते हैं, that is also thing of beauty. क्योंकि जब हम सुकून की नींद लेके सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ही फ्रेश महसूस होता है. So bower is a thing of beauty. A sleep full of sweet dreams is a thing of beauty. And health and quiet breathing. Good health gives us happiness. That is a thing of beauty. Quiet breathing. Somewhere quiet breathing indicates towards meditation. I hope all of you know about meditation. We do inhalation and we do exhalation. And when we do inhalation and exhalation and when we breathe in that relaxed manner, somewhere we are relieved of all those anxieties that are lingering in the subconscious mind. I hope all of you will agree with what the poet says and what I am explaining. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. What does this mean? On every morrow. Morrow means morning. हर सुबह जैसे हम फूलों की माला गुथ रहे हैं. What is wreathing? Wreathing means weaving into wreath. फूलों की माला. जब भी हम फूलों की माला बना के भगवान को अर्पित करते हैं, somewhere we surrender ourselves in front of God and somewhere we are making a relationship with the nature. Because flowers also represent nature. So every morning we are renewing our relationship with nature in the form of wreathing of the flowery band.
spite of despondence of the inhuman, dearth of noble natures. Spite of despondence. Spite over here means in spite of. Despondence का मतलब disappointment. तो चाहे पूरी दुनिया में निराशा है, चाहे inhumanity फैली हुई है, dearth is lacking of noble natures, अच्छे व्यवहार की कमी है. We see all around us, we are surrounded by inhuman people. We are surrounded by dark spirits. Because this is the age of Kali Yuga, where we have evil surrounding everywhere. We see anxiety, stress, frustration, tension, worries, annoyance, frustration everywhere. Of the gloomy days, gloomy means sad. All the days are sad. Why? Because of the responsibilities that are there over our shoulders, because of the stress that is coming in our lives, because the things are not going my way, I feel gloomy. Of all the unhealthy and over darkened ways, सारे रास्ते अंधकारमय हो गए हैं. Made for our searching, yes, in spite of all, हम ढूंढें तो भी हमें अच्छाई नहीं मिलती. सब तरफ बुराई है, सब तरफ तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, but still the thing of beauty gives us everlasting joy. आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार हम जब कहीं वेकेशंस पे होके आते हैं और वापस अपनी रूटीन लाइफ जीने लगते हैं और कभी कभी एनॉयड फील करते हैं, परेशान फील करते हैं, तो हम उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब हम काफी खुश थे. एंड दे प्रोवाइड अस द स्टैमिना टू बेयर द डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स. Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Pall is the covering. So somewhere our spirits are covered with darkness. Darkness over here symbolizes ignorance. It symbolizes immoral attitude. It symbolizes anxiety, worry, tension. तो हमारी आत्माओं को जैसे अंधेरे ने घेर लिया है, और इस आत्मा के अंधेरे को दूर कौन करता है? The thing of beauty. So we have discussed a lot about thing of beauty, but what is this thing of beauty? Thing of beauty है क्या? तो चलिए आने वाली लाइन्स में समझते हैं कि according to the poet, what is actually thing of beauty? Such the sun, the moon, जैसे कि सूरज और चंद्रमा, वो भी thing of beauty है because they are a part of nature. Trees old and young, sprouting a shady boon. पेड़ जो कि पुराने हों या नए हों, लेकिन वो प्रस्फुटित करते हैं क्या? A shady boon, blessing, जो हमें छाया प्रदान करते हैं पेड़, which protect us from the hot climate. So trees also are things of beauty. You might have observed that whenever we see a lot of greenery in front of us, we feel relaxed because that green color somewhere symbolizes nature, and nature is the ultimate comfort. We can relax peacefully in the lap of Mother Nature. For simple sheep and such are daffodils. Simple sheep. Sheep symbolizes innocence. Sheep symbolizes human beings. Do you know how? Because according to Christianity, Jesus Christ was called the shepherd who was responsible for bringing all the humans out of the darkness. तो यहाँ पे सभी इंसानों को शीप के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्हें शेपर्ड कहा जाता है, जो हमें हमारे अंधकारों से दूर करते हैं. Such are daffodils with the green world they live in. Daffodils, all of you might have heard of daffodils. They are beautiful flowers. तो वो फूल जो कि हरियाली में उगते हैं, वो भी तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही है. And clear rills that for themselves a cooling covert make. Clear rills, rills का मतलब होता है स्ट्रीम्स या नहरें. तो जो पानी की नहरें हैं वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, विच प्रोवाइड अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट क्लाइमेट, अगेंस्ट द हॉट सीजन. प्रकृति, पेड़ पौधे, पानी, ये सभी हमें बचाते हैं एक्सट्रीम हीट से. दे प्रोटेक्ट अस, दे प्रोवाइड अस कंफर्ट. द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्करोज ब्लूम्स. So musk rose are wild roses which have wonderful fragrance. तो वो जो खुशबू है मस्क रोज की, वो भी तो थिंग ऑफ ब्यूटी है. तो प्रकृति की सारी चीजें, चाहे वो सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ फूल हो, फ्लोरा, फौना, प्लैनेट्स, रिवर, वाटर, एवरीथिंग इज अ सिंबल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, प्रोवाइडेड वी हैव दैट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दोज थिंग्स. And such too is the grandeur of dooms we have imagined for our mighty dead.
We all have heard of stories of past where wonderful heroes have fought bravely against the enemies. तो वो जो कहानियां हैं जो हमने हमारे पूर्वजों के बारे में सुनी है, वो कहानियां जहां पे उन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया, वो कहानियां भी तो कहीं ना कहीं थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि वो कहानियां भी तो हमें मोटिवेशन देती है. किस चीज के लिए मोटिवेशन? डिस्पोंडेंस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशंस, सभी को झेलने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फेलियर्स, क्योंकि जब हम हमारे पूर्वजों की विजय गाथा को सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी तो मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी आगे बढ़ना है और जीवन की फेलियर्स को नजरअंदाज करते हुए एक कदम आगे बढ़ाते जाएं. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. तो जो भी सुंदर कहानियां हमने हमारे पूर्वजों के बारे में सुनी है, हमने योद्धाओं के बारे में सुनी है, दे ऑल्सो आर थिंग ऑफ ब्यूटी. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from heaven's brink. जो सुकून हमें थिंग ऑफ ब्यूटी देती है, वो सुकून उसी तरह है जैसे कि एक कभी न खत्म होने वाला फाउंटेन बह रहा है. कहां से? फ्रॉम हेवंस ब्रिंक. व्हाट इज ब्रिंक? ब्रिंक इज एज. तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की जो एज है वहां से अमृत की वर्षा हो रही है, और वो अमृत की वर्षा जो सुकून हमें देगी वो ही हमें थिंग ऑफ ब्यूटी देती है. या कहा जाए तो जितना ग्रैंड्योर उस अमृत की वर्षा का होता है, उतना ही ऐश्वर्य, उतना ही वैभव थिंग ऑफ ब्यूटी का होता है. सो अल्टीमेटली द पोएट्री सिंपली मीन्स दैट टुडे इन 21st century we are all surrounded by a lot of tensions. I hope all of you will agree to me. पढ़ाई का टेंशन, फैमिली का टेंशन, करियर का टेंशन, रिलेटिव्स का टेंशन, एक्वेंटेंसेस का टेंशन, और भी पता नहीं क्या क्या टेंशन. कैसे इन सारी टेंशन से दूर रहा जाए? वी शुड बी इन द लैप ऑफ नेचर. यू कैन कोरिलेट दिस विद चैप्टर 1 ऑफ योर विस्टास, द 3rd level, if you remember. See children, we should always look after interdisciplinary, intertextual approach. हमें आना चाहिए एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कोरिलेट करना. यदि आपको याद हो तो द 3rd level में हमने पढ़ा था थियरी ऑफ एस्केपिज्म, साइकोलॉजिकल एस्केप. So moving into the lap of nature also is an escape from the harsh realities of life. और टाइम टू टाइम जब हम प्रकृति की गोद में हमारा समय व्यतीत करेंगे तो अपने आप हमें हिम्मत आएगी. We will gain the confidence and the courage to face the difficult times of life and to succeed in every walk of life. So this was the thing of beauty. Now we are going to discuss about the poetic devices which are used in the poem. So children, please understand what are these poetic devices and how to identify them. Don't try to by heart them. So let us start with the first poetic device, that is metaphor. I hope you understand what a metaphor is. Metaphor is a comparison without the use of comparative words. जैसे कि मैं कहती हूँ कि the whole world is a stage and all the humans mere actors and actresses. मैं कह रही हूँ कि पूरी दुनिया एक स्टेज है और सारे इंसान वहां पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं. एक्चुअल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया एक स्टेज के जैसी है. सो हियर आई एम ड्रॉइंग अ कंपैरिजन, बट आई एम नॉट यूजिंग कंपैरेटिव वर्ड्स, एंड दैट इज मेटाफर. सो क्विकली लुक थ्रू द पोएम एंड ट्राई टू एनालाइज वेयर डू वी हैव मेटाफर. फर्स्ट, bower quiet. Bower quiet is a metaphor because it somewhere indicates towards the comfort that we get when we sit under the shade of a tree. Second, sweet dreams is a metaphor. Sweet dreams is a metaphor for relaxation. The relaxation that has been symbolized as a thing of beauty. Third, wreathing a flowery band. Every morrow are we wreathing. प्रकृति के साथ एक नया रिश्ता बना रहे हैं फूलों की माला को गूंथ के. तो फूलों की माला गूंथना एक मेटाफर है फॉर द रिलेशनशिप दैट वी आर मेकिंग विद द नेचर. Paul is a metaphor for the covering of darkness. Endless fountain of immortal drink, अमृत की वर्षा. अमृत की वर्षा भी मेटाफर है for a thing of beauty. So these were the metaphors in our poem. Moving on to the second important poetic device, that is alliteration. I hope all of you know alliteration, which is the basic poetic device. हिंदी में जिसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार, where there is repetition of a consonant sound. I
I hope by this time you'll be able to analyze where do we have alliteration. Just think before I tell you. Noble natures, no. Cooling covert. Again, we have alliteration in cooling covert. Band to bind. Such the sun. Sleep sweet. Simple sheep. That for themselves. So you might have observed that in all these phrases we have alliteration because there is repetition of a consonant sound. So we have done with the metaphor. We have done with alliteration. Now moving on to imagery. What do you think is imagery? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और वो दृश्य हमारे सामने हमें दिखाई देने लग जाता है. And that is imagery. You might have observed while going through the poem that there were many things whose images you could see in your subconscious mind. And that is why we have imagery in flowery band, shady boon, clear rills, daffodils, cooling covert, grandeur of dooms, pouring of the immortal drink. ये सारे डिस्क्रिप्शंस को जब हमने पढ़ा हमें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही चल रही हैं. एंड दैट इज व्हाई वी हैव इमेजरी. ऑल्दो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजरी बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली विजुअल इमेजरी. See children, there are multiple poetic devices and we are not going into the depth of all poetic devices. We will only discuss those poetic devices which you will need at the high school level. उसके अलावा हम ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल ओनली डिस्कस दोज विच आर इम्पोर्टेंट. द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरन. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस टर्म ऑक्सीमोरन? If you remember your poem photograph that you had in class 11th, there was a phrase which said that labored ease of loss. Labored means with difficulty. Ease means easy. So when we use two contradictory terms together, that is an example of oxymoron. जैसे कि labored ease, जैसे कि deafening silence. Deafening means जो बहरा कर दे. Silence मतलब चुप्पी. तो बहरा तो शोर करता है, चुप्पी कैसे बहरा कर सकती है? So that is oxymoron. So in our poem we have oxymoron in mighty dead. Mighty means powerful. Dead means who are dead. तो जो मर चुके हैं वो powerful कैसे हो सकते हैं? So that is why we have oxymoron. Moving on to the last poetic device, we have transferred epithet. Now children, do you know what is this transferred epithet? See, epithet means adjective. ठीक है? जब हम उस adjective को किसी और noun के साथ use करते हैं, वो हो जाता है transferred epithet. एक simple से example से समझते हैं. अगर मैं कहती हूँ I had sleepless night. I had sleepless night. Actually, the night was not sleepless. I was sleepless. मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं sleepless थी. रात sleepless नहीं थी. But then I have used sleepless, which is an epithet with a noun that is night, and that is why this is transferred epithet. अब शायद आप फटाफट पोएट्री देख के लोकेट कर पाएंगे कि हमारी पोएट्री में ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ है. फर्स्ट वी हैव इट इन द ग्लूमी डेज. दुखी दिन. क्या दिन दुखी होते हैं? नहीं, उन दिनों में हम दुखी होते हैं. तो gloomy days is transferred epithet. Unhealthy and over darkened ways. Unhealthy, over darkened, अंधकारमयी रास्ते. रास्ते अंधकारमयी नहीं होते, हम अंधकारमयी होते हैं क्योंकि हमें रास्ता होते हुए भी दिखाई नहीं देता. So that is transferred epithet. And one more important thing is the rhyme scheme. I believe that by this time you know how to identify the rhyme scheme. So quickly have a look through the lines of poem and tell me what is the rhyme scheme. The rhyme scheme is A, A, B, B, C, C, D, D. So with that, the poem A Thing of Beauty is over. Regarding the questions, as you know pretty well that you can have extract-based questions from any line, any para of the poetry. So you should be thorough with each line and each word and its meaning and all the poetic devices. And don't forget, never cram anything. Understand, you will enjoy the process of learning because literature is a beautiful thing to enjoy and also to learn. Thank you.